So, would you all would like to start with the question that was asked in the group? Although Parul ji had asked, पर पारुल जी भी है नहीं. Whatever you wish to, whatever is in your mind and you are aligned to, whatever. I think let she has said, can we discuss this in the session, as a lot of contradictions are there, but then she has not talked of the contradictions that she is experiencing. Anybody wants to say anything on that? Meditation, concentration and all that? Or I think contradiction which I got by reading all the things which we were discussing in the group is that some people think meditation is concentration, and something, and they, like some meditation practices focus on concentration, and some meditation practices may not focus on concentration. There may be different types of meditations, and if there are contradictions, we need to know about them. What is it and why it is. Okay. See, in our everyday usage, if you look at, meditation has become the buzzword. So this is something which is very abused now. फैट जैसा होता है ना, अब ये फैशन ही है. हर कोई अपने आप को स्पिरिचुअल क्लेम करना चाहता है. हर व्यक्ति अपने आप को बताना चाहता है कि वो मेडिटेट करता है और वो कितना मेडिटेटिव है. एंड when people say that I meditate, they indirectly are saying that I am rooted, I am grounded, I am aligned. जबकि आप उनके साथ 10 मिनट बैठेंगे तो उनके व्यक्तित्व में आपको कुछ भी ऐसा नहीं समझ आएगा. आप उनकी बातचीत सुनेंगे, आप उनके हाव भाव देखेंगे, जीवन में उन्होंने किन बातों को वरीयता दी हुई है, प्रायोरिटी दी हुई है, वो सब देखेंगे, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं समझ आएगा कि कहीं भी उनके भीतर में जरा भी फेथ है या अहम भाव से थोड़ी सी भी रिक्तता है. आप पाएंगे कि उनमें अहम भाव प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है, और आप ये भी पाएंगे कि उनको लगता है कि जीवन में सब कुछ उन्होंने ही किया है. इन सभी कारणों से मेडिटेशन जो शब्द है ना, वी हैव लिटरली लेफ्ट राइट एंड सेंटर हमने बजा दी है इस वर्ड की. वी हैव not respected the word enough. We have not cared to not utter the word where it is not relevant or where it is miscommunicated kind of thing. Most of the people by meditation typically mean concentration. I'm concentrating on this, concentrating on कुछ music लगाएंगे, कुछ environment बनाएंगे. मेडिटेशन का अर्थ ही है कि आप वातावरण से आप अछूते हैं. स्थितियां जो भी हो, आपके अंदर एक स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति है. आप आत्मस्थ हैं, यू आर सेंटर्ड, यू आर रूटेड, और परिस्थितियां आपको आके हिला डुला के नहीं जा सकती हैं. बहुत कुछ होता रहेगा जीवन में. लाइफ इज सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट वे. बहुत कुछ होता रहेगा, लेकिन आप जो हैं वो हिलते डुलते नहीं हैं. यू आर, and that is what is supposed to be in the meditation state or meditative state. So to begin with, concentration helps. I'll take you to Patanjali Yoga Sutra, which we had decided कि हम इसके बाद उठाएंगे डिटेल में. पतंजलि जो है ना, हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी कड़ी है, क्योंकि पतंजलि इज मेड फॉर डूअर्स. ज्ञान योग कहता है कि आप जैसे समझ गए तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? समझने का क्या अर्थ है? Now, these words are not to be taken just like that. समझना तब होता है जब वो आपके भीतर घुस जाए और वो आप में एक ऐसा परिवर्तन ले आए कि आप वर्जन ए से वर्जन बी सी डी वॉट एवर हो गए, बट यू आर नो मोर दैट वर्जन.
दैट इज व्हाट इज मीनिंग इज मेंट बाय अंडरस्टैंडिंग। यदि मुझे ये समझ में आ जाता है कि चाय पीने से फला फला नुकसान है, तो अब मैं चाय को हाथ भी नहीं लगा सकती। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अंडरस्टैंडिंग। इट इज लाइक आई हैव सीन इट, नो इट्स टी का मतलब है कि मेरे भीतर कुछ कौंधेगा और मुझे बता देगा कि नो। व्हेन दैट हैपेंस देन देयर इज अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान योग यहां पर आता है। इसके पहले यदि आपको सिर्फ पता है कि चाय क्या क्या करती है, तो दैट इज नॉलेज। आपके पास इंफॉर्मेशन भरपूर है, किंतु अभी तक वो आपके जीवन में उतरा नहीं है। इट हैज नॉट क्रिएटेड एनी रिपल्स इन योर लाइफ, इट हैज नॉट शेकन यू फ्रॉम एनी एस्पेक्ट। इट इज जस्ट लाइक कि सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन सब फूकते हैं, बिल्कुल उतनी कहानी है। सो फॉर दैट इज व्हाट ज्ञान योग इज ऑल अबाउट। सो ज्ञान योग कहता है कि आप समझे तो परिवर्तन हुआ, लेकिन हम जिद्दी लोग हैं, हम थोड़े टेढ़े लोग हैं, तो हमको समझ में बात आती है नहीं, क्योंकि समझने के लिए भी एक ह्यूमिलिटी चाहिए, सरेंडर चाहिए, हम्बलनेस चाहिए। और हमारा अहंकार तो इतना अ, बढ़िया से खड़ा रहता है कि काहे का हम्बलनेस। उसके बाद आता है भक्ति योग। अब भक्ति कहती है कि आप समर्पित हो जाएं। अब समर्पण तो हमें तो और भी नहीं आता है। एक तो हम जिस नॉलेज एरा के सदस्य हैं या मेंबर हैं, यहाँ पे काहे का समर्पण वपनपण, यहाँ पर तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये अचीव किया, यहाँ पे कहाँ समर्पण हो पाएगा। इसीलिए ज्ञान योग से शुरुआत करना थोड़ा सा आसान होता है, बिकॉज देन इट ओपन्स अप लॉट ऑफ नॉट्स फॉर यू। फिर पतंजलि कहते हैं कि भाई तुम लोग डूअर्स हो, तुम्हें करने में बड़ी रुचि है, तो मैं तुम्हें करवाऊंगा। एंड देन ही गिव्स यू द 8 लिम्स ऑफ योगा। तो 8 लिम्स ऑफ योगा में हम जानते हैं कि हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 आपके लिम्स हैं। ध्यान कहाँ आ रहा है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान आ रहा है सेकंड लास्ट 7वें नंबर पे। तो शुरुआत होती है यम से, कि हमने अपने आप को अपने एग्जिस्टेंस से अभी थोड़ा सा अलग कर लिया है, बिकॉज एग्जिस्टेंस का हमारे ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो आई नीड टू आइसोलेट माई सेल्फ, आई नीड टू क्रिएट सम इंसुलेशन दैट आई एम नॉट impacted by the environment. The second is your niyam. So now here comes the set of discipline. That is important because I am so used to living a lifestyle which is so unconducive for spiritual growth that I need certain disciplinary, what do you say, I mean those principles, that you should not do this, you must do this, you must not do this, you must get up at this hour, you must sleep at this hour, you must not eat this, you must eat only these, read this, that, whatever whatever. तो बुद्ध के देखेंगे आप, तो इतने उन्होंने नियम दिए हुए हैं अपने संघ के लोगों को कि आप चकित हो जाएंगे। परंतु मानव का जो मन है ना, वो इतना चंचल है कि उन नियमों की बड़ी महत्ता हो जाती है, दे बिकम इम्पोर्टेंट। तो ये नियम हो गया। अब उसके बाद आता है आसन। नाउ व्हेन यू विल ट्राई टू सिट इजीली, your body is the first thing that will irritate you, will not allow you to sit. इधर खुजली होगी, उधर चुभेगा, आपका शरीर अभी अडेप्टेड ही नहीं है शांति रूप से बैठ पाने का। तो जितनी प्रकार के प्रॉब्लम्स या इरिटेशन, अभी आप जैसे ही शांत हो जाएंगे ना, आपको अचानक से महसूस होगा, अरे यहाँ पे खुजली हो रही है, अरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, अरे यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड यू विल बी टोटली डिस्टर्ब। फॉर एग्जैक्टली दिस रीजन ओशो जो है वो बहुत डांस वगैरह करवाते थे, एंड ही यूज्ड टू से कि यू लीव योर बॉडी लूज, यू लीव योर बॉडी लूज एंड एग्जॉस्टेड। ध्यान करने से पहले अपने आप को इतना थका दो, 10 मिनट पागलों की तरह कूदो फांदो, बिकॉज यू नीड टू टेम टीच योर बॉडी। इसीलिए फिर आसन आए, और इतने जो योगासन हैं जो हमको दिए 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 गए हैं, उन योगासनों का कारण
कोई बहुत बलिष्ठ शरीर बनाना नहीं होता है, सिर्फ उन योगासनों का कारण होता है कि आप शरीर से मन पर नियंत्रण ले सकें. Now science has proven that mind and body are the same thing. So when through the mind you can challenge your body, which is जब हम मनोमय कोश में होते हैं तो हम मनोमय कोश से भी अन्नमय कोश को डायरेक्ट कर सकते हैं. सो दी पतंजलि सेज कि ठीक है, अभी तुम अन्नमय कोश में बैठे हो और मनोमय कोश तुमको समझ नहीं आता है, तो चलो यू डू दी आसनास विच विल हेल्प यू टू टेम योर माइंड अ लिटिल, इट विल बिकम लिटिल easy. Pratyahara is I am now turning all my senses inwards. That is pratyahara. And then comes dharana, dhyan, samadhi. Now, what happens is when you do all these things in the system, dhyan happens. You do not do dhyan. And that's why it is coming so much at end. Meditativeness happens because you have done rest of the things. You have prepared yourself. You have gained the patrata. So now meditation in your life will happen. You would not be doing it anymore. That is the value of meditativeness. इसीलिए जो कंसंट्रेशन से शुरू होकर के ध्यान की तरफ जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं उस ट्रैप में फंसने के कि भाई मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, और क्योंकि मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेरे पास एक अलाउंस है कि बाकी 23 घंटे में पूरी तरीके से उपद्रवी हो सकता हूँ, मैं सारा उठापटक कर सकता हूँ, आई कैन बी वायलेंट, आई कैन बी दिस, आई कैन बी दैट. व्हाई? बिकॉज आई डू मेडिटेशन, आई हैव ऑलरेडी डन माई 1 hour ऑफ मेडिटेशन ऑफ द डे. ज्यादातर लोगों के जीवन में मेडिटेशन टेक्निक के नाम पर यही घटित होता है, और इसीलिए बहुत से गुरु आपको मेडिटेशन जैसा कुछ करने देंगे ही नहीं. दे विल स्टॉप यू, और एल्स व्हेन दे मेक यू डू, they ensure that you are doing it in an environment which is conducive. So they even create the environment. आपको शिविर में ले जाया जाएगा, आप कैंप्स में जाएंगे, आप 3 दिन के लिए 5 दिन के लिए उनके पूरी व्यवस्था में रहेंगे, उन्हीं का दिया हुआ आहार खाएंगे, उसी दिनचर्या के हिसाब से चलेंगे. All those things are then fixed. Why? Because since we do not tame our mind, we have no control over our mind, so all of a sudden you cannot become meditative. You will have to go through those processes. उसको कहते हैं ना मन का रेचन करना, कैथारिसिस होना. It needs to be घिसाई करके उसकी सफाई करनी जरूरी होती है. Then only diamond would shine. So it is like that. So अगर आप बिल्कुल कोर में चले जाएंगे और आप सत्य की रोशनी में मेडिटेशन को देखना चाहेंगे, then meditation happens. Meditation cannot be done. But given the context, if one is, and that's why only meditation technique will never help you. You will always need ज्ञान योग at any cost. आप हीलिंग करिए, आप कुछ भी कर लीजिए, परंतु साथ साथ ज्ञान का चलना आवश्यक है, क्योंकि हमारे जीवन में जिन रूढ़िताओं ने, okay, it says my internet connection is unstable. Am I internet is okay? Okay. तो हमारे जीवन में जिन बिलीफ सिस्टम्स ने अपना पूरा पंजा जमाया हुआ है, where from we operate, it is only through the Gyan Yoga that clarity can come, and we can start to look at things in different light. And then when we club it with the other paths, then your progress is, or movement is, faster. That is what happens. So only concentration, बहुत कम chances है that it will really lead to meditativeness. Technically speaking, ऐसा possible जरूर है. I would not negate it, but looking at who we are, the way we are, that is a dream, is what I would say. So these things need to be really understood. Otherwise, we will be trapped.
Then apart from concentration, what other technique or thing you will say, if the meditation is not concentration, and if we need to like involve all other things along with meditation, so what I think we need to follow all that yam niyam and all, then only is it possible, or there is a direct way, maybe for some or may not be for others sometimes. Can we jump, or we need to follow this only? And if not this, what is that other way? It depends upon how strong is your thirst, Komalji. That's one. I can lay down the path, but will you be really willing to walk on it? I know how difficult it is to walk. I personally am not able to walk the path that rigorously. So it is not just about the path, it is also about how ready are you. Because, and what is that you desire? Are you just desire a peaceful living in the current status? Or is your desire to jump out of this cycle of birth and death? What is your desire? Do you really desire him? Because if you desire him, in fact, let me get this very straight, even on this physical plane, whatever we want to excel it in, we have to really give ourselves to it totally. आपको म्यूजिशियन बनना है तो आपको अपने आप को म्यूजिक को पूरी तरीके से दे देना पड़ेगा. आपको डांसर बनना है, then you have to give yourself to dancing completely. You can't say कि मैं तब प्रैक्टिस नहीं करूंगी, मैं तब वो नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी. Especially during the initial stage, you gain certain mastery over something when you have given yourself to that. Is that not true? Yeah, it Gain is, and it is, mastery I over. think, different for different people. Like what you are telling is beginner, and then you little bit you learn, and then you think you need little more. Now you need little more. Okay, you are done away with these things. Now let me do. Yeah, like what you said, thirst depends upon your thirst and what is your need at this moment. Exactly. Like So different when people on the have different needs, on different. see, Yeah. I am not at all concerned about what different needs people have. People might have 10,000 needs. If we are talking of that, if you're talking of truth, if you're talking of the higher purpose, unless you really want him totally and you do not give yourself totally to that, totally cannot happen. पूर्णता के लिए अपने आप को पूर्णता के साथ ही देना पड़ता है. नहीं, that is true, but some people like अभी उस वर्ल्ड में अपनी लाइफ में इतना ज्यादा वो है कि उसी से पार पाने के लिए बहुत कुछ चाहते आपकी हैं. उतनी ही पात्रता है, आप जितना अपने आप को तैयार करते हैं और फिर आप उतना ही प्रयास करेंगे और आपको उतनी ही समझ आएगी और आप उतना ही पाएंगे. बहुत सीधी सी बात है ना. तो ये एकदम रेशियो प्रोपोर्शन हिसाब किताब बैठा हुआ है. जितना चाहोगे उतना ही अपने आप को दोगे और उतना ही फिर पाओगे. Right. So it depends upon, it begins with your thirst. How strong is your thirst and how real is your thirst? Depending upon that, you just, अब जैसे लोगों को अभिनय करना होता है ना, एक्टर एक्ट्रेसेस बनना होता है, कैसे घर छोड़ के भाग जाते हैं, भाग के वहां पे फुटपाथ पे भी सोते हैं. We have heard so many stories, isn't it? See that that desire of becoming that actor actresses is so high that one is willing to let go all the comfort that the house is currently giving. Is they're willing to go and sleep on the footpath, and they are willing to take up all the challenge and live in utter poverty and get things done. अब उसके बाद भी क्या मिलता है नहीं मिलता है इसका कोई गारंटी नहीं है. तो यहां पर तो आप पूर्ण की बात कर रहे हो, तो फिर अपने सैक्रिफाइसेस समझ जाओ. 1 सेकेंड. So
Depending upon what your thirst is, you give yourself totally to it. You do not give yourself totally to it, and that's how you progress. So क्या करना चाहिए ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप चाहते क्या है. लाइफ से फसाद हटाना है तो getting realistic, to be able to look at opinions as opinions and facts as fact, those things will be quite helpful. उसके आगे जाना है तो फिर हम उसके आगे की बात करेंगे. शालिनी जी, correct way of meditation. There is no way. Truth is a pathless land, Krishnamurti said. So to a pathless land, everybody has to find their own way. I'll come back to Zen, which says when the student is ready, the teacher appears. The only thing that we can do is keep reading ourselves. That's the only thing that's in our hand. The master will pick us up, depending upon how ready we are. You know, there is, ये बड़ी दो मुही तलवार जैसी चीज है. हम एक तरफ तो हम चाहते हैं और हम वाकई चाहते हैं, मुझे बिल्कुल भी जरा सा भी संदेह नहीं है, शंका नहीं है हमारी चाहत पर कि हम स्पिरिचुअली प्रोसीड करें, प्रोग्रेस करें. लेकिन दूसरी तरफ उन मोमेंट्स में जब अहंकार को कुचलने की बारी आती है ना, हम डर जाते हैं. ये होता है कि नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा. और मैं इसलिए ये बोल रही हूँ, so that the next time anything of this kind happens to you, you can actually allow your ego to be crushed, because from that only your road can move ahead. वहीं से रास्ता निकलेगा. So if you can just start becoming conscious of how your ego is playing, that's a very good beginning. That's a very good beginning. And more you become aware, more you do not allow it to, and the best moments are when you are irritated. No, you want to clasp your teeth, गला पकड़ के मैं दबा दूं तुम्हारा, ऐसे ख्याल आ रहे हो, and you are able to watch it as a third person. Those are the best moments. When you are able to do this, then you will also be able to hold yourself when moment of elation happens, extra happiness. घर में बैंड बाजा बज रहा है, कितनी खुशी की बात है, ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, you will still be okay. कर लिया तो ठीक है, हो गया, होना था शायद, और किया होगा, मैंने ही कोशिश की होगी, so what? This is not the these two words are magic actually. so what? तो ये जब होने लगेगा ना, then you will see amazing peace coming in your life. It is such a freedom, so liberating, I cannot tell you. That people are getting angry on you and you say, ठीक है यार, so what? And people are, you know, they're crazily, they are thanking you and they are singing songs and praises of you, and you still say, so what? There is such liberation, you even do not owe a thank you. You know, it is like that. कि वो गा रहे हैं तो वो गा रहे हैं ना, मुझे क्या है. It is like that. It is so liberating, I cannot tell you. You have to taste that. You have to taste that. And then you are able, you are on the track, focused. समात्वम योग उच्चते, इसका ना आप हिंदी बताइए, अभी संस्कृत मेरी पहुंची नहीं है वहां तक. So that is what is sambhav, to stay same in all conditions. Some equal भाव, आपका जो भाव है, आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपका जो
reactions है, yes, you are not living in polarities. कभी यहाँ कूद गए, कभी यहाँ कूद गए. And this only is the position where from you can actually be a witness. Let me tell you, यहाँ पे रहकर यहाँ पे रहकर witnessing नहीं कर पाओगे. Witness होने के लिए कुछ संभाव की आवश्यकता बहुत तगड़ी है. और ये दोनों बातें, संभाव more witnessing को support करता है, more witnessing more संभाव को support करता है. So they both are feeding each other. It's a loop. So that happens. ठीक है? Anything, any question, in anybody's mind? Otherwise, we'll proceed to Taittiriya Upanishad. Anything that needs more discussion, more clarity, more contemplation? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. हमने या श्रेयस. Richa Devi. I just had a question. So you said when compared to just knowledge, understanding, will actually make it better, right? So how do we get that understanding? Like, because many times we ourselves have limitations, so we think that we'll never be able to cross our limitations to get to that understanding stage. Give me an example. For example, let's say a fat person, right? I mean, no offense intended. So I used to be fat. Like now I've reduced weight a little. Everybody so is when I on was fat, no video, so who will get offended? Yeah. So when I was like overweight, I knew everything, like how to reduce weight, like what to eat, what not to eat, yeah, and all that. But practically, like when it comes to action, I could not, though I had all the knowledge, I could not do it. Right? I did the things that I was not supposed to do. Right? So yeah, this is a good example. Actually, I think everybody, for that matter, they knows what to do, what not to do, but they end up doing what, the other things. This is what moral science is all about. Moral science never works. It never works. Shoulds and should nots never works. Unless whenever you are with should and should nots, you are with an option. I should do it. But will I do it? The moment it is I must do it, then there is no choice. I have to do it. Now, I was 70 kgs 5-6 years ago. And one day I looked myself in the mirror. I mean, I was just standing, getting ready to go someplace. And I looked at myself and I said, yaar, ye to nahi chalega. Literally, these were my words. Ye to nahi chalega. My thyroid was all-time high. It was at 35. And despite doing yogasanas, zero weight loss and all that, and weight was at good high, of course, it always felt heavy on the body. But the moment I said ye to nahi chalega, there was certain rejection about the current physical state because it was uneasy. Not just because it was ugly or something, no, not that, but it was, at least you can be sure that a fat body is invitation to a lot of disorders, physical diseases. So the moment I said ye to nahi chalega, some antenna in me started to function. I met somebody through which I got introduced to aerobics. I went to aerobics. She gave me the diet chart. I did not follow it for 2 months. I just kept doing the aerobics. So initially I used to get badly exhausted. Slowly some stamina got built up, so could go through it. But in 2 months of time, I said to myself कि यार ये बिना भोजन के ऊपर नियंत्रण किए कुछ होने वाला नहीं है. समय निकल जाएगा और कुछ होगा नहीं.
And then I decided कि अभी नहीं खाने का है तो नहीं खाने का है. And then to quite an extent, I would say that I brought my food habits to some sensibilities. Otherwise, it was very nonsense. I'm a big fan of tala chana and the Indian cuisines, chole bhature and dosa vosa. So I had to eliminate all that. So, and slowly and gradually, I saw that even my diet reduced automatically. I just could not eat. But it demanded some or a huge awareness. I don't know awareness is the right word or not, but it demanded huge consciousness that this is not done. This is the way it is hitting me is very hard. Till the time you do not see how hard it is hitting, you will never change. So Gurdjieff had these very interesting methodologies. If somebody would come to him and I'll say, I'm a smoker and I want to quit smoking, he'll say, Acha, you're a smoker. You sure you can't quit smoking? Then no, I can't quit smoking. I've tried quite a few times. He'll say, okay, let's come and try. He'll make him sit in a room, closed room, no ventilation. He'll start providing him with cigarettes. Okay, smoke. 1 cigarette, 2 cigarette, 5 cigarettes, 10 cigarettes, 1 pack, 2 pack, 3 pack. After a while, this fellow will start having, now I can't smoke anymore. Now the room is all full of smoke. And this person also can't smoke anymore. And he will bring him to a moment or to a standpoint wherein he can actually see what is smoking doing to him internally. And now this person just can't smoke any further. So Gurdjieff used to do all such very interesting experiments. You will have to read him in details. So information, knowledge, and that coming to you in a format that you just know what it is doing to you. And this is what exactly is meant by seeing false as false. बिल्कुल पता हो, सटीक पता हो कि ये आपके साथ करेगा क्या, इससे होगा क्या. मुझे पार्टी में जाना है, मुझे बिल्कुल पता होना चाहिए कि उस पार्टी में मेरे साथ क्या घट सकता है, वहां पे कैसा वातावरण होगा, लोग किस तरह की बातें करेंगे, किस प्रकार का भोजन होगा, किस प्रकार का एम्बियंस होगा. And so, given my current state of mind, what are the chances that I will slip and what are the chances that I can hold myself? कि मैं किसी के कपड़े को देख के प्रभावित नहीं हो जाऊंगी, किसी के मेकअप को देख के प्रभावित नहीं हो जाऊंगी, किसी के नौटंकी को देख के प्रभावित नहीं हो जाऊंगी. And if I know this, I do not go to the party. And if I really know that I want to test myself, या वहां जाने से I am not going to move, and if it is really that meaningful, necessary, take a call. पर एग्जैक्ट पता हो और वो जो मेरे साथ करेगा उसके प्रति थोड़ी रिजेक्शन हो, which means some self love. we are not people who love ourselves. We are very suicidal in our tendencies. We do everything which is against us. So this, क्योंकि लव का तो मतलब हमको पता नहीं है, हमको तो सिर्फ अटैचमेंट मालूम है. फ्लावरिंग, ब्लॉसमिंग, वो सब क्या होता है, वो सब they are very good words. So self love is zero. Self physicality के साथ भी कुछ नहीं है प्यार, मन के साथ भी कुछ नहीं है प्यार. मन के ऊपर भी सब तरह के इन्फ्लुएंस चल रहे होते हैं, and we allow it all kind of thoughts. Same with the body. We do not mind poking our nose in Facebook for hours, on YouTube, on Netflix, on OTTs and all that. So when we keep doing these things, of course, meditation would not happen and we will be shallow. To move to the level of knowing, understanding, it demands some work on yourself.
इसीलिए डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंस है. ऑल्दो जब सत्य की बात होती है तो हम कहते हैं कि वहां डिसिप्लिन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि फ्रीडम actually is not free. Freedom comes after a lot of so सत्य में स्थापित हो तो आपके ऊपर किसी प्रकार के नियम की कोई आवश्यकता नहीं है. आप नियमों के आगे निकल चुके हो. You are beyond all the rules and regulations. Yeah, but for like you said in the beginning, you need to follow. Then only you will reach. What I will say here is something I would just like to share is like as we are reading this Taittiriya Upanishad and this Annamaya Kosha, then Pranamaya Kosha, Manomaya, Vigyanmaya, and then Anandmaya, 5 koshas. What we are reading nowadays. Like I would say, I was lucky enough to get all these koshas cleaned in one single program, and that was my beginning. So in that, what had happened, like they had our food, Annamaya Kosha cleansing was there, then Pranamaya Kosha, Pranayam. Komal ji, hold on. Then could Komal ji, move hold to on. that and then came back. And then again, we know that there is something where we can be reached. If not that time, and then we can come back. And then again go towards that. A way is there, that's what. There is always a way. The question is always about how much are we willing to walk. Right. Secondly, you might get cleansed it, but these are not something that you cleanse it and it is gone for life. No, it is not possible. So it demands of only awareness. Exactly. It demands every moment cleansing, every moment. Right. And that is why awareness has such high importance. Right. You can't. फिर वही बात हो गई ना, हम 23 घंटे क्या कर रहे हैं और 1 घंटे क्या कर रहे हैं वाली हिसाब से. राइट. हाँ, पूरी जिंदगी भर क्या कर रहे हैं और वो 1-2 महीने क्या किया, वो उसी पे डिपेंड करता है. राइट. Shreyas, does that answer you? Yeah, that answered my question. But I have one more small follow-up question. So you said there comes one time, like when you just realize how your habits or how your activities are bothering you and your system, right? And that physical seriousness will actually make you change your habits and all that. It make you turn in some other direction towards your own betterment, right? But many times till that point of seriousness comes, I mean in my life also that point came when I had some health issues. Only after that I contemplated, and then changed myself. So till that point of seriousness comes, we don't change. We all we take it very easygoing. We take it very casually. Till something physically manifests, right? Some consequence. So we don't mend our ways. So how do you bring that seriousness? Even though like the consequences are still not very, this is $1 million. solid. And this exactly is the reason why Kabir has to say, "Dukh mein sumran sab kare, sukh mein kare na koi." If that demands sensitivity, from the time we take birth, the environment in which we live, it does everything for us to wash away our sensitivity. It makes us emotional fools. We absorb everything like a sponge. The environment drives us through pleasure and pain. And we are conditioned socially. We are given all the moral principles and we are expected to work like that, and we are given expectations. Nobody teaches really self-love. Everybody thinks self-love is self-centricity. That's how it has been defined. And so everything that will take away sensitivity from us is done. And then till the time no pain happens, we don't even realize that pain is real.
वो कहते हैं ना, एक कहानी है कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है जो दूसरों को गड्ढे में गिरते देख के समझ जाता है कि गड्ढा है तो गिरेंगे और गिरने से कष्ट होता है। इसको विद्वान कहते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन। दूसरा होता है जो गड्ढे में गिरता है, कष्ट होता है और फिर उठ करके समझ जाता है कि गड्ढे में गिरने से कष्ट होता है, अब मुझे संभल के ही चलना है, और वो संभल जाता है। इसको कहते हैं जनरल पर्सन, कॉमन मैन। बट हम सब ना तीसरी कैटेगरी के होते हैं, उसको कहते हैं गधा। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो इज, तीसरी कैटेगरी इज कि गड्ढे में गिरते हैं, दर्द होता है, निकलते हैं, अपने आप को झाड़ते हैं, कष्ट का थोड़ा मैनेजमेंट कर लेते हैं, फिर वापस गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। डू यू सी दैट पीपल, यू नो, दिस इज, एक ये है ना कि कीप मेकिंग मिस्टेक्स, मिस्टेक्स आर अ ग्रेट वे ऑफ लर्निंग। सेइंग है जो खूब फ्लोटेड रहता है। What they miss is keep making new mistakes. We are such unconscious people that we keep making the same mistake. एक बार गुस्सा आया तो समझ में आता ही नहीं है कि गुस्सा क्या कर जाता है। मैंने लोगों को देखा है कसम खाते हुए, अपने बच्चों तक की। अब ये भी एक कहानी होती है, I will not get angry, and 2 दिन बाद फिर से। What do you call that behavior? So we are self-defeating people, we are self-sabotaging people. It demands certain level of sensitivity and compassion towards ourselves. And that's when things can start moving. And that is why Rumi had to say that pain is the place, wound is the place where light enters from. Why would wound be needed for light to enter? वो मोटी चमड़ी गैंडे के जैसे हम वैसे हो जाते हैं. We do not allow things to enter us. इसलिए नहीं हो पाता है. And that's where all this clarity becomes immensely helpful. Because then you know how you are creating your obstructions. When Zen says get out of your own way, you know how you are standing in your own way. And then the moment you become aware of it, oh my God, this is what I'm doing. Then moving out, not becoming obstruction, becomes possible. So this is why such environment is very, very necessary for each one of us. हम भगवान की कृपा पर भरोसा करके बैठ नहीं सकते हैं. हम जहाँ हैं, हम जैसे हैं ना, लोगों को भगवान की कृपा पर बड़ा भरोसा होता है जब तक सब कुछ चल रहा होता है ठीक, जो उनकी भाषा में ठीक है उसके अनुसार, और एक अच्छा सा न्यूज मिल जाना चाहिए, एक समाचार, नौकरी चली गई है, रिसेशन आ गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, हार्ट अटैक आ गया है, बस एक चिट्ठी मिल जानी चाहिए ऐसी, और उसके बाद आपका सब भगवान पर से भरोसा ऐसे ही खत्म हो जाता है. So these sessions then really matter a lot. I have learned like this. Had I not been blessed, मुझे भी नहीं समझ आता. But fortunately, there was something in me which was ready to brutally kill myself. I could be very brutal towards myself. I really exactly know where I'm obstructing myself also. And I also know how am I preparing, how am I orienting myself. You will have to figure out some way to stay connected. आप जहाँ पे भी connected रहो, जहाँ पे भी it allows you to, and please just be aware that wherever you get connected, you are not given concepts. बहुत concepts दे दिया जाता है. हम जो भी पढ़ भी रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको पंचकोश याद होने चाहिए. हमको कोई लेख थोड़ी लिखना है.
वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वेरियस वेज हाउ थिंग्स फंक्शन in existence. So it's opening up a possibility for us. It is not that we should become ready to give bhashan at some place. That is not the purpose. So stay connected with whatever which liberates you, which allows you to stay in sambhav, that which questions you, and give yourself the liberty that whosoever you stay with, you allow that person to question you. Yeah. So only when these things can happen, then when you only allow yourself to stay connected, then things can move on. Yeah. Some connection is very very important, very very important. उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है. आप किस तरीके से कनेक्ट रहेंगे, कहाँ रहेंगे, ये आप चुन लीजिए. और आप ही इनिशियली तो आप ही चुनते हैं. आपके पास तो बहुत सारे रास्ते आएंगे, पर किस रास्ते के साथ आप रहना पसंद करेंगे, दैट इज योर चॉइस टोटली. बट यू know that every choice has a consequence, and if things are not working well, it is only making your ego even more denser. And if you are that aware that you can figure out if ego is being made denser or dissolution is happening, you are feeling little lighter. We know these things. ऐसा नहीं है. अंततः तो सत्य के ही पुत्र हैं हम लोग सब. We all manifest from truth. So that element is there with all of us. हम सबके पास है. ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी डिवॉइड है. It is not, that is why it is not achieving, it is realizing, it is already there. It is about knowing that it is there. And that's why when these liberating experience happens, you just know that this is the right place. Give yourself permission to be there, to stay there. That is all I can say right now. Yes, thank you, Richa. It helps. Yeah. This one, yeah. Thanks a lot, Didi. It makes a lot of sense actually. Chaliye. So let's move on to Vijnanamay Kosh. We begin with understanding the word विज्ञान. क्यों चुना है विज्ञान? तो थोड़ी सी हिंदी आ जाएगी. उपसर्ग का कहानी है. We is all that which is good. इसीलिए जो लोग मेरे साथ बने रहे और हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, विद्या अविद्या है ना. तो ज्ञान, सिर्फ जो ज्ञान है वो आपका नॉलेज है. विज्ञान इज knowledge that takes you towards that orients you towards that knowledge exactly is called Vigyan. Vigyan is the good one. इसीलिए तर्क में भी वही बात आती है ना. तर्क वितर्क होता है. एक तर्क है जो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट में होता है, एक कुतर्की होता है जो हम अननेसेसरी जस्टिफिकेशन देते हैं, और तीसरा होता है वितर्क, वो तर्क जो तर्क को ही गलाने में मदद करता है. ठीक उसी तरीके से वो ज्ञान जो मेरे विगलन में मददगार होती है, दैट इज विज्ञान. तो जो चौथा कोश है जो ऋषि बताते हैं, वो कहते हैं विज्ञानमय कोश की बात होती है, और कहते हैं विज्ञानम यज्ञम तनुते. So he begins by saying an intelligent person goes on performing sacrifices with great respect and also promotes all kind of activities. Let me just share the screen. So as you see here, knowledge से intention and intelligent person से है. He performs all sacrifices and is the real agent of all physical activities. So there are some very important words.
sacrifices is one such word. Then real agent is another word. Yeah. God's worship. Brahma the eldest. So the Upanishad says कि जो विज्ञानमय कोश में स्थित है वो sacrifices क्या हैं? So that's where we begin. Sacrifices को हम यज्ञ कहते हैं. आप उपनिषदों के पास जाएंगे तो वो कहते हैं कि यज्ञ वो है जो कुछ ऊंचा पाने के लिए किया जाता है. वेद में जो कर्म कांड है जहां यज्ञ होते हैं यही होता है ना, एक पर्पस होता है, हायर पर्पस दैट नीड्स टू बी अचीव्ड फॉर व्हिच द एंटायर सेटअप इज डन एंड यज्ञ इज डन. और यज्ञ में डाली जाती है आहुति. ठीक है, सो यू हैव सम ऑफरिंग्स टू इट. उपनिषद जब सैक्रिफाइस की बात करते हैं तो उनका अर्थ होता है आहुति के रूप में आप अहंकार को डालते हैं. दैट इज द आहुति. द अहंकार हैज टू गो एंड द सैक्रिफाइस यज्ञ. एवरीथिंग इन योर लाइफ मस्ट बिकम यज्ञ रूप. Everything that you do must come from the center of love or truth and not from this I center. मैंने यज्ञ किया, ये नहीं हो सकता, then यज्ञ नहीं होगा. So the one who is into Vijnanamaya Kosh, he understands everything, and so he will not say no to all that is needed to be done on the existential plane. जो भी करने की आवश्यकता है वो उसको उससे विमुख नहीं होगा, भागेगा नहीं कि भाई मैं तो चला कमंडल लेके हिमालय, कंदराएं मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, अब तो मैं वहीं बैठूंगा. वो कहानी नहीं होती है. किंतु वो जो कुछ भी करेगा वो यज्ञ रूप होगा. हर वो चीज जो आवश्यक है, भोजन पकाना है भोजन भी बनेगा, but bhojan also becomes meditation. पढ़ाई करनी है आप पढ़ाई भी करोगे, काम करना है काम भी करोगे, but everything will have that quality of meditation. Why will it have quality of meditation? What is meditation supposed to do? Meditation is supposed to dissolve the I amness, the identity part of it, and everything starts to get that quality when I amness starts to go away. So the person would do yajna and all sacrifices. And is the real agent of all physical activity. See, Upanishad is saying him to be real agent. So what is the real agent? Real agent is the one who is able to discriminate. विवेक है ना, विवेक क्या कहता है? नित्य अनित्य भेदः विवेक. विवेक वो है जो इसमें भेद कर पाए कि नित्य क्या है, what is eternal, और अनित्य क्या है, what is that will come and go, मरण धर्मा, जो खत्म होगा. So is the real agent, he knows what is what. बिल्कुल हंस वाली कहानी है कि दूध क्या है और पानी क्या है वो फर्क कर सकता है. So that is what the real person or the real agent is supposed to do. Of all physical activities, मन को भी के भी कार्यों को ऋषि physical activities ही कह रहे हैं, क्योंकि मन में क्या होता है, mind is also matter. What else is it? Mind is also frequency, waves, thoughts and all that, which is nothing but material. So all physical activities means all your physical as well as mental activities, psychological activities. Then he goes ahead to say all the gods worship knowledge as the Brahma the eldest. All the gods go ahead to worship him. हमने gods का कई बार अर्थ देखा है. तो जिनको भी जिनकी हम आराधना करते हैं ये कह करके कि वो अपने कोटि में उच्च हैं और हम उनकी तरह होना चाहते हैं, वो भी ब्रह्म की
पूजा करते हैं, तो वो ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाना चाहते हैं, वो भी सत्य के शरण में जाते हैं. Then the Upanishad goes to say, if a person knows knowledge as Brahma and if does not swear from it. Can you share the screen side by side? It will be easier for us also. So here it is. Yeah. If a person knows knowledge as Brahma and if does not swear from it, she attains all desires and comes to abandon all sins in the body. Knowledge as Brahma is Pragyanam Brahma. शिव सूत्र में जाते हैं तो ज्ञानम बंध, शिव सूत्र कहता है कि ज्ञान जो है वो बंधन है, और प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? जो प्रज्ञान है, जो कि विज्ञान, विज्ञान प्रज्ञान एक ही कोटि की बात है. They are all of the same category. So if a person knows knowledge as Brahma, so which means is centered in intelligence, and if does not swear from it, so if he does not move away from it, he or she attains all desires. How does this happen? Attainment of all desire? How does this happen? The ultimate desire, when it is attained, like knowing knowledge as Brahman, then all other desires are of no matter. That's what I understood by this. Wonderful, wonderful. Very nice, very nice. Absolutely. When you have achieved the highest, will you really keep desiring for the lowest? The lower ones, you will not. So the all one other sins, who gets the highest desire, attains that, to that person all desires, attainment happens. And two things can happen, you know. संसार तो द्वैत है ना, मन तो द्वैत है, तो यहाँ पे दो चीजें होंगी. या तो आपने कभी किसी, अब ये बिल्कुल निर्भर करता है कि जो गुरु भी है वो किस प्रकार से अपनी गुरुता निभाता है. महर्षि रमण है तो उनको कहीं जाना नहीं है, वो अपने स्थान पर स्थित हैं, लोग आए और उनसे दीक्षा लें, उनके सानिध्य में बैठें वगैरह वगैरह. सो यू विल नॉट सी हिम with possibly also because वो समय था जब ऐसे व्यक्ति के पास भी लोग आते थे. आज के समय में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे. और एक तरफ ओशो भी थे जिन्होंने सीधे कह रखा था कि मैं तो अमीरों का ही गुरु हूं, मुझे गरीब नहीं चाहिए. because he wanted to say that spirituality is not about becoming poor in terms of material wealth. He always wanted to say, because that has been the image of spirituality, कि भाई जो spiritual आदमी है वो उसके पास तो बस एक दो जोड़ी कपड़े होते हैं और एक कमंडल होता है और एक लाठी होती है और तो कुछ होता ही नहीं है. और वैसा जीवन जीना है आध्यात्मिक होकर के तो पहले ही लोग कहाँ पे जाएं. So all desires are attained, either you move towards kind of being Osho or you be towards Maharishi Raman. In both the cases, from within you are devoid of desires. You are not possessed by anything. Things are there to be used, you use it, and that's all. You do not get possessed. And then he comes to abandon all sins in the body. So why all sins in the body gets abandoned? Because when you are with the highest, all other automatically, like being to, when you are in that being, automatically you will not do the wrong things. So all sins will get abandoned. They'll be removed. What is wrong thing, Komalji? What is wrong thing? Pardon? What is wrong thing? He will not wrong do all the means, like what so-called sins they say. You'll maybe you'll
what all moral things you say, they get dropped automatically, maybe. Like morality comes naturally, you can say. That's what. You need not be moral, need not follow the moral values, but moral values will get followed automatically. Like the opposite of immorality will not happen, you can say. अगेन यहाँ पे भी बॉडी को, माइंड और बॉडी दोनों पढ़िए. एंड सिंस इसलिए नहीं धुल जाते हैं कि अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो वो गायब हो जाएगा. इसलिए गायब हो जाते हैं बिकॉज द डूअर इज नो मोर. राइट. ये जो पाप और पुण्य है वो किसके लिए होते हैं? वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए होंगे ना. इट हैज टू बी फॉर समबडी. इट हैज टू बी फॉर सम डूअर, फॉर सम एंटिटी. Now the entity himself is no more, so how can there be any papa or punya or something? So the concept of sin itself goes away. But the Rishi says it so beautifully. He's actually alluring you to move on that path. He's saying it so that one is inspired कि अब मेहनत कर ही ली जाए थोड़ी. बिल्कुल. पाप धुल जाएंगे. नहीं तो गंगा नहाना तो हमारे गंगा नहाने से नहीं धुलेंगे, नॉलेज में जाने से धुल जाएंगे. हाँ, नहीं तो फिर तो कितना सुविधाजनक है. हम गंगा भी नहाएंगे और ऋषिकेश भी घूम आएंगे और हम बोलेंगे ना हम पाप धो के आ रहे हैं. तो okay. Then after he says of that, okay, now from here he takes you to the आनंदमय कोश. जैसे हमने देखा है हर एक श्लोक में दो भाग हैं, एक पहला भाग है और दूसरा भाग है. पहला भाग उस कोश के विषय में होता है और दूसरा भाग जो है वो अगले कोश की तरफ हमको ले जाता है. तो अगला कोश जो है वो आनंदमय कोश है जिसकी तरफ हमें ये श्लोक लेके जाता है. He says that of that this one was really is the embodied self. Different from this self made up of intellect is another self within with in form of bliss. So that there is this introduction of Anandamay Kosh, and again as in every Kosh we have seen that some bird sketch has been created. Here also it has done the same. And then what does it says to the its head is wait. The joy of seeing things you like is the head. The joy of acquiring things you like is the right wing. The joy of enjoying things you like is the left wing. And bliss is the self, which is the middle part of the body. So the catchy words, very catchy words, joy of seeing things you like. Oh my God, what do I like? The entire, by the time one is in Vijnanamay Kosh, what I like changes. It goes complete transformation. So अभी जो आपको पसंद है तब उन्हीं चीजों से आनंद आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. Because the karta would have dissolved to a great extent. The joy of seeing things you like is the heads. In fact, if I can go take the liberty of going little ahead, then the Rishi would like to say that what you would like to see is all that is manifestation of Atman. So this person will be able to see the essence of truth in everything. कहते हैं ना हर चीज में भगवान है. वो जो ईश्वर तत्व है, सत्य तत्व है, वो हर चीज में व्यक्ति देख पाएगा. And hence the joy of seeing. The joy of acquiring things you like is the right wing. You actually would not be an acquirer. By this time, accumulative mentality goes off. But whatever you have, you would be blissful with that. The joy of enjoying things you like is the left wing. What will you enjoy?
satsang is that you will enjoy, and being centered is that you will enjoy, and bliss is the self. So that's the center or the atman of that birth, to be centered in bliss. कई जगह आनंदमय कोश को आत्मन बता दिया जाता है. Please know that Anandamay Kosh is not the Atman. In fact, Anandamay Kosh is closest to the Atman, closest to the real self. So, पात्रता यदि हम उसके ऊपर ध्यान दें तो हमारी इतनी कोशिश तो जरूर हो सकती है कि यात्रा आनंदमय कोश तक पहुंचे और वहां जाकर के आप रुक जाएं और वहां से आपको ईश्वर ले जाएंगे आगे. So, after all that you have done, grace does everything. You must wait. There is a beauty in waiting. That is what bhakti is all about. You must feel the pain of the separation and still sing his songs and let him come and take you, pull you through. That only can be the prarthana. So this is the second. Very good. Like just now I was reading another day one book, and what you said, the last words na, for the like bhakti, bhakt ko uske ऊपर इतना छोटा सा, just in 2-3 lines I would like to explain that to make it more clear. कि एक बंदा था, वो पेड़ के नीचे बैठा था, उस पेड़ पे कांटे ही कांटे थे बहुत सारे. तो गॉड का एंजल आता है और वो उसको बोलता है कि मैं भगवान का संदेश पहुंचा सकता हूँ, वांट टू से एनीथिंग टू गॉड. तो वो बोलता है कि हाँ तुम मुझसे पूछ के आओ कि वो मुझे कब मिलेंगे. तो वो जाता है उसका संदेश लेके, फिर गॉड के पास वो वापिस आता है और उसको बोलता है कि गॉड ने बोला है कि तुम अभी तो बहुत टाइम है तुमको गॉड से मिलने में, इतना टाइम है जितने इस पेड़ पे कांटे हैं, इतना साल लगेंगे तुम्हें. तो उसपे तो पता नहीं अनगिनत कांटे होते हैं. एंड ही स्टार्ट्स डांसिंग, एंजॉयिंग, मजे करता है, बहुत बहुत खुश होता है. तो वो एंजल को गुस्सा आ जाता है कि मैं तो कैसा संदेश लेके आया हूँ कि तो इतने कांटे हैं, इतने साल लगेंगे तुझे उसको मिलने में. तो वो बोलता है कि ये संदेशा कितना अच्छा है कि मिलेंगे तो सही, चाहे इतने साल बाद मिलेंगे, लेकिन ये संदेश तो आया ना कि वो मिलेंगे. एंड देन द गॉड अपीयर्स एंड टेक्स हिम, that is away from time and space. These are not ordinary bhaktas. Like उनको ये तो है कि हाँ मिल तो जाएंगे ना, तो वो उसको ले जाते हैं फिर गॉड. तो बहुत सुंदर स्टोरी था ये. I just wanted to relate it and if it can be of some use in this session, that's why. Yeah, thank you. Nice. चलिए यहाँ पर उपनिषद को विराम करते हैं and we will continue with it next week. Anything that's emerging to anybody, any question, any sharing, any comments, कुछ भी यदि ध्यान में आ रहा हो which you would like to bring upon. कोमल जी आप ही कह रहे थे कि सबको वीडियो पे होना चाहिए, अपनी खुद ही गायब हो. मुझे लगता है कि मैं no, ऐसे लगा मुझे कि होना चाहिए. तो but after that I thought it's my thinking only, so it is okay if it is not there. So I also like in that okayness. We are all responsible only for ourselves. Right, that is true. Yeah. That's all. Yeah, Shreyas, you were saying something? Yeah, Didi, I have 2 questions, like 2 things. So I read somewhere that when the Shaktipata happens, right? When the Diksha, initiation happens, when the Guru does Diksha, so it happens on the level of the Vijnanamaya Kosha. So that is one thing. And one more thing is in the Autobiography of a Yogi book. So Paramahamsa Yogananda, he talks about the gross body, the subtle body, and the causal body, and I think they are also related to the Panchakosha, both the initiation and these 3 bodies. So could you please tell something about that? So these are more into the tantra side. I understand. I don't know much about these things. The
3 bodies. You have the physical body, then you have the कौन से होते हैं और causal body होते हैं और cosmic होता है, कारण शरीर, स्थूल शरीर और causal body. क्या कहते हैं उसको हिंदी में? Gross, subtle and causal. I don't know Hindi. So. अच्छा, तो gross तो it's your स्थूल, हाँ स्थूल, सूक्ष्म और कारण. Sorry, gross is your स्थूल शरीर, which is the physical form. Your sukshma sharira is the karan, the body as explained, because of which this physical form comes into picture. So this is nothing but all the desires. You know, there are a lot of theories around it, but as I have come to realize, it is the desires that take birth. And that is why you do not have individual soul's journey. There is nothing like individual soul's journey. At that level, a desire has the capability to get fragmented into 1,000 parts and take 1,000 births also. So that is one thing. Atman is nothing, it has nothing to take birth or so. It is beyond death and birth and death. So it is very foolish when people talk of soul taking birth, if at all they are talking soul as Atman. So if the soul is taking birth, soul is desire, it is not the Atman. That one we must at least realize. And then there is the Sthula Sharir, Sukshma Sharir, and then the Karan Sharir. So the Karan Sharir is the desires, the Sukshma Sharir is all your the energy body. I haven't really done too much of study on that part, frankly speaking. For me, it's like to understand the processes the way we are right now, and then figuring out moving ahead. Maybe in future, if this comes to me, I'll try and throw some light. The second thing is Shakti path. Again, I don't have much knowledge about all this, but I understand that there is something called grace of the master, grace of the guru. And when guru sees that yes, the patrata is there and this person must be, then there are certain processes which has been very consciously created, through which this energy transfer happens. And those things are called. So there is one thing which is getting mukti, liberation from this entire facade of birth and death. So if I have to call upon a few names, that they will be Maharishi Raman and Nisargadatta Maharaj and a few of those types. To them, if you will talk of such things like Shakti path, etc., they will not even answer you. They did not do any such process. No such process did they involve you into. In fact, if one is not in a surrendered mode, these processes become biggest deterrent in one's movement towards spirit, in their spiritual progression. Because I don't understand the process. I don't understand the importance. I don't have that clarity. And something has been done to me. I will never be able to handle it. I will never be able to handle it. Then it will, maybe what I am getting is like by this understanding, maybe it is like you become dependent on some process and then your own search gets hindered. Maybe You will, something like that. Thoda sa. See, these things will not take you to Atman. They are processes that enhances your journey, speeds up accelerates your journey. But acceleration only can happen for those who are consciously moving on that path.
For most of the unconscious people, if any process is done, because even if you do pranayam in certain way, it creates certain energy in the body, and that does have impact. And I have seen people, I know of some one person, especially I came to know this fellow advanced a lot in all the yogic practices, but because of lack of clarity, the person whom he took as guru manipulated him left, right, center. Hatha yoga, I think that You will people follow. lose. I also know somebody was telling me, yeah, one of the person, sir, I was interacting with, and he was telling me that Mahesh Yogi, he used to do certain kriyas in which this Kundalini Jagran stuff that we know, he would do like that. Some scientist from ISRO or Bhava, I'm not able to recall, he did that practice, that stuff with him. And because this scientist was rooted in his Manipura chakra, he was rooted in his ego, that up to that level, the Kundalini energy rose and it got stuck there. And then he became deformed from the waist for life. He got deformed from the waist for life. Nothing could bring him back. Your preparation is of immense value. We get allured badly, crazily to all these stuff, to all these kriyas, and we don't even realize, if we have not worked upon ourselves, what it can do to us. So your patrata will take you wherever. That is all I will say. Depending upon who you are, you will keep meeting such people. So, when I was talking to my Reiki master, because she's initiating me to master's level, and it was about a year earlier, and it typically happened because I used to do some healing, and for me, healing is a tool that allows me to stay on this spiritual path, because I do not typically do healing for myself, and if at all I have to do, I would work upon my emotional content using healing. That's the typical use of healing for me. So she would always press us that you must stay grounded, you must, because she herself follows Maharshi Raman, so she understands what it is all about, and she very beautifully correlates. So the healing for us is not just a tool, which the way it has become in the market, it is not like that. So a lot of people used to come to me that, Richard, tell me, where do I learn this? I want to learn this. And then somebody actually took me through that journey, and I was like, oh my god, ye 2 ghante mein kya karate hain? And because she used to make us sit for 2 whole days, and then I said ki, if you think I have reached to a level, and she is very choosy about creating masters, because she says you have to be ready as a person, otherwise you can't handle it. And then she said, Richa, it is not about steps that you do, step 1, step 2, step 3, step 4. It is about who you are. And I tell you what, depending upon the kind of master also you are, you will attract such kind of student. That's what she said to me. And then the group had, she had created certain groups and all, wherein they have worked on me, and especially last 6 months, though, butchered, and she says कि ऋचा को जाके बोलो उसका कचुम्बर निकाला है. That's what she says. To allow yourself to go through that process, जहाँ आपका कचुम्बर निकाला जाए और आप फिर भी निकलवाओ, you do not run away. It's not easy. It's not easy. So have faith, allow that to sprout in you beautifully,
and just see how your container is becoming bigger and deeper. Work on the patrata, and rest things will be taken care of. Have faith. This journey has a lot to do with faith. Don't think that you are the person who's going to dictate this entire thing. No, that's not possible. ठीक है? I'll ask a question if that's okay. Hello, everyone. I thought we should respect the video turning on, at least for the questions. So, moksha is confusing for me as well. जब मोक्ष होता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हैं, तो फिर हम कहाँ जाते हैं? Where does that I go? I don't know. Okay. So मुझे ना I don't know. Like you asked. इसको ना मैं आपको एक Everybody is मॉडल searching that. एक मॉडल बता देती हूँ जितना मुझे समझ आया है. लेकिन हम जीवन को पूरी तरह नहीं समझते, परंतु हमें मोक्ष की बड़ी इच्छा होती है. बिना जीवन Very को true, समझे very आप true. मोक्ष कर सकते हैं. तो इसीलिए at one level at least you must drop this idea. बुद्ध भी उन्होंने जब सब कुछ कर लिया और फिर बोधि ट्री के नीचे बैठ गए कि अब तो कुछ नहीं करना. He dropped everything, and few hours realization happened. He did not do anything for realization. Realization happened to him, and this is how it is. So ना हम जीवन को समझते हैं, ना मृत्यु का हमें कोई बोध है, तो हम उसके पार का क्या जानेंगे. देखिए बहुत सीधी सी बात है. अभी हम क्या हैं शरीर और मन के अलावा? हमें किस बात का बोध है? हम सूक्ष्मता को तो कुछ भी नहीं पहचानते हैं. तो मृत्यु जो शारीरिक मृत्यु है, उसके पश्चात न शरीर रहने वाला और न ये मन रहने वाला, इतना गारंटी है. तो जिसको हम बोलते हैं वो तो नहीं रहेगा. तो मोक्ष किसको मिल रहा है? Who is getting liberated? है ना? So this is what And that who is what I'm getting by this is किसको मिल रहा है, मतलब वो तो ऑलरेडी लिबरेटेड ही है, उसको क्या मोक्ष मिल रहा liberated है? ही है. It is वो तो all पहले about से ही liberated है. knowing that you were the Body- one. वो तो And पहले the से moment you know you were the one, questions who is will already drop. liberated. And so that's a beautiful sign. जब तक questions है, अभी तो नहीं है liberation ना, questions ही बंधन है. So that's why Maharshi Raman always used to say, find out who wants to know that what happens after birth and death and all that. Find कभी-कभी out तो ऐसा who लगता है ना, ऋचा की कहते हैं कि एक्सपीरियंस, इफ यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग यू विल नेवर अंडरस्टैंड. ऐसा होता है. लेकिन ये जो मरने के बाद का है, ये तो हमेशा थ्योरी ही रहेगा. उसका एक्सपीरियंस किसने देखा और किसने आके बताया, और वो रियल अपना एक्सपीरियंस तो नहीं है ना. वो जिसने भी लिखा है, बताया है रीबर्थिंग का, वो तो उसका एक्सपीरियंस, उसका भी कैसे होगा? वो आने के बाद कैसे बताएगा? इसीलिए इन चीजों को बुद्ध के पास ना कुछ 8-10 प्रश्न थे जिनके वो उत्तर कभी देते ही नहीं थे. वो निषेध था. Don't ask me these questions, I will not answer. He'll keep silent. This used to be one of the questions. इसीलिए उन्होंने निर्वाण शब्द का प्रयोग किया. निर्वाण का मतलब होता है बुझ जाना. You are no more, gone. अब बताओ किसको जानना है क्या मोक्ष? So ऐसे लगता है ना कि जो वो भगवत गीता वाला है ना, पाप पुण्य स्वर्ग नरक जो कुछ भी है, सब कुछ यही है. The minute you have dissolved yourself, there is no such thing actually. Heaven, hell, it's all अपनी जो मानसिक परिस्थिति है उसी से हम बना लेते हैं उसको. हाँ, the moment जीवन you are मुक्ति angry, the moment you अभी are तो हमें pulled and जीवन मुक्ति pushed का in ही नहीं 1,000 पता. directions, you are in hell. The moment you are liberated, free, you are in heaven. That's all what hell is, and that's what all heaven is. And anything beyond this is not going to help us. होते होंगे 7 लोग, चलो मैंने वो भी मान लिया, उससे क्या? So what?
उससे आनंद की अनुभूति हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना, तो बस कहानी खत्म। We must know where to drop things. आई थिंक सो। वो मोक्ष में गायब होके क्या मिलना है? रह के तो वो ब्लिस एक्सपीरियंस करना है ना। I remember, वही जीवन में ही तो मुक्त, जीवन मुक्त अगर नहीं हुए हाँ, तो उस मुक्ति का क्या करना है? क्या करना है उसका? हाँ, लाइक अरे करोगे कौन गायब। करेगा? कौन करेगा? वो करेगा? हमें है ही नहीं, तो वो तो हम है ही नहीं You तब had तो। been mocking. He said that people have this concept of heaven after death, and people have this concept of going to heaven and having lot of sharab and या वो तो एक बहुत अप्सराएं नाच रही हैं और पुराना सर्व कर रही हैं कॉन्सेप्ट सब हो कुछ। गया, अभी उसको कोई इतना I मानता नहीं want है, to मुझे ऐसा लगता understand है। one thing. He says, I want to understand one thing. I know. Who is going to enjoy those apsara and that sharab when you don't have this body? True. How That is is how true. will you enjoy? So if one wants to be a stupid person, one will buy any concept. Yeah, so there are few things which I have understood that it's better not to get into given our current situation. True. And I come खुद back को again. तराशने की कोशिश करना है, Allow, बस उस पे लगे रहो कि that's all. जितना अपने आप को सिंपलिस्टिक बना सकते हो, लिव इन द मोमेंट। सरलता बहुत बड़ी बात होती है। To become easy बहुत बड़ी बात होती है। So if that can happen. अच्छा, टेल मी वन थिंग, ऐसा कोई ग्रंथ है जिसमें सृष्टि की रचना समझाई जाती है? पहले क्या बना था, फिर क्या, ये तो तैत्तिरीय उपनिषद में भी तो हमने देखा ही, सृष्टि की रचना, आत्मन से कैसे आकाश तत्व आया, और उपनिषदों में अलग अलग प्रकार से क्रिएशन प्रोसेस को समझाने का प्रयास किया गया है। ये उसके बारे में कहा गया है। या और उस सब वो सब बातें इशारा एक ही तरफ करती हैं कि तुम वही हो, तो तुम बीच में उलझ जाते हो, इसका ये सब लॉलीपॉप ले लो, किंतु ध्यान उधर रखो। अच्छा, हमें ऐसा क्यों बनाया गया है कि हम बिल्कुल 1% परमात्मा का अंश है हम में और बाकी सब हम ये मटेरियल उसमें? हमको उल्टा क्यों नहीं बनाया गया? व्हाई आर वी मेड, मतलब इतनी दिक्कत क्यों है यार? जो अचीव करना है वो अचीव पहले हमको सीधा बना देते भगवान, उनके हाथ में था ना। भगवान ने कुछ नहीं बनाया, भगवान को कुछ बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। भगवान ने तो आपको इतनी छूट दी है कि उन्होंने आपको बंधन में भी रहने की छूट दे दी है। आपको बंधन पसंद है, आप बंधन में रह लीजिए, इतनी छूट दे दी है उन्होंने। भगवान की कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे, है तैत्तिरीय उपनिषद में आगे थोड़ा और क्रिएशन के विषय में, हाउ इट ऑल हैपेंड। Duality is the way to experience. I'm coming back to एलन वॉट की जो किताब थी, हमने एक बार और बात करी थी, द book of taboo, to know who you are, the book of taboo, in which he says that, acha, you got the book? Wow. Nice, Vidya. In which he says that God wanted to experience himself, so he said, it's only me, so let me multiply. He multiplied, but he is a perfectionist, he does everything perfectly. So he said, if I remember I am this one, then how will I play the game? So he said, let me forget. So the moment he forgot it so wonderfully that he doesn't remember and he's playing hide and seek. It is like this. एक राजा जो है ना, ऐसा हुआ कि गायब हो गया अचानक से, कुछ हुआ उसके साथ, वो गायब हो गया। कुछ दिनों बाद वो राज्य में भीख मांगता पाया गया। अब लोग उसको आके कहें कि अरे यार तुम राजा हो, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? पर उसको भरोसा ही ना हो, राजा हो तो भीख मांगे, उसको 1 रुपया भी कोई दे दे तो उसको पकड़ ले। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि कुछ कहानी हुई और राजा की जो स्मरण थी वो वापस आ गई, उसकी स्मृति वापस आ गई। उसे याद आ गया कि अरे वो तो राजा है,
अब वो भिखारी की वेशभूषा में है तो भी उसकी चाल में एक बदलाव आ गया, क्योंकि वो राजा है, उसे ये याद आ गया. It is exactly like that. We have all forgotten that we are kings. The whole कहानी is of Yanana. और रियलाइजेशन के बाद कुछ नहीं होता है. zen में कहते हैं ना, एक there was a Zen monk who was asked, what you used to do before realization? So it is said that the Zen monk was cutting vegetables, and somebody comes and he says, what you used to do before realization? He said, cut vegetable only. तो पहले भी मैं सब्जी काटता था, आज भी सब्जी काटता हूँ. Action से कुछ नहीं. It's the inside. On the level of actions, you can never differentiate. It is the level of being where differentiation happens. It is level of being, not the actions. तो वो, और being को कौन जानेगा, यही आगे तैतरीय उपनिषद में भी है. My master says that कृष्ण को जानने के लिए कुछ तो कृष्ण जैसा होना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम जिस कृष्ण को जानोगे वो या तो, और ये देखिए ना, बड़ी मजेदार बात है, हम जब जन्माष्टमी मनाते हैं तो हम कृष्ण का गीता वाला स्वरूप का तो कभी सेलिब्रेशन करते नहीं है. मार्केट में तो बाल रूप की सारी चीजें मिलती हैं ना, झूला मिलेगा, कृष्ण को सजाने के कपड़े मिलेंगे, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल चलेगा. गीता वाले कृष्ण कहाँ जाते हैं? जन्म का है ना, जन्म का दिखाते, जन्माष्टमी. तो जन्म किसका? कृष्ण का भी जन्म हो सकता है क्या? लेकिन देखिए, मनुष्य को फंसना कितना पसंद है, वो उसमें अपने आप को बहलाने के सारे उपाय कर लेता है. सो कृष्ण को जानने के लिए वो कृष्ण वाला कुछ एलिमेंट, वो कुछ तो होना चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट, अदरवाइज नॉट. व्हिच मीन्स as and more you will get aware, you will automatically move into ananda. Ananda will happen because that element in you has started to shine. घूम फिर के बात पात्रता पे ही आती है. अभी तक मैंने वही सीखा है. So that is all I can give. ठीक है, चलिए. Okay, let us sit straight and close the session. If you know, you can say with me. Close your eyes, take a deep breath. Om Purnamadah Purnamidam Purnamudachyate Purnamudachyate पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. शांति शांति शांति. धन्यवाद.